Hi guys, today's session is Fortinet Firewall configuration, its interface configuration and access firewall on GUI on web browser, then interface configuration, then static root configuration in Fortinet Firewall and Fortinet Firewall policy configuration communication to LAN zone to DMZ zone, then LAN zone to internet zone. So this is the one topology. So there is one Fortinet firewall. Let me click here. Yes. So you can see here, this is Fortinet firewall and this is router, Cisco router, router R1, router 2. This is internet and through network cloud, I will take management access. Okay. And in this lab topology, we will configure state Fortinet firewall initial configuration. Then we'll take access on GUI on web browser and we will configure interface like port 2, port 3, port 4. In port 4, we will assign only DHCP IP, DHCP, because on DHCP we will get particular dynamic IP from internet and then we can access the internet. Remaining on 3 interface port 2, port 3 we will configure as a static routes, static IP. Okay. IP range there is different. Here 172.168.1.2 and here 172.168.2.2 something. On router side, we will configure router R1. Here we will configure like uh, 1.1.1 subnet, and on our router R2 sides, we will configure uh, one different loopback interface which is 2.22. From router R1 and R2, we will configure default routes. We will configure default routes from R2 and we will configure default route from R1 as well. Okay. For router on Fortinet firewall, we will configure. This is our planning. It's this session is basically useful for uh, new engineers which are coming on firewall segment, security segment. Okay, CCNA level. So that session will be very useful for that guys. On Fortinet firewall, we will configure static routes as well for 1.1.1. We will configure static routes towards router R1 and we will configure static routes for R2 towards like this router R2. Okay. So how can we achieve? And then final task will be there like thing is that we will ping 2.2.2.2.2 from router R2 and we will test that ping is happen or not. Okay. Once that ping will be happen between R1 and R2, then we will configure, will access the internet over that Fortinet firewall. Okay. So that task will be there. Okay. So let's see. Friends, all these devices are on stop mode. So let me start on those devices. Start also. Let's see. I started all devices. Let me access the CLI console access. Guys, my Fortinet firewall up now. Let me start. By default, its credential username is admin and password is empty. Okay. Okay. Sorry. Admin. Admin. Okay. Guys, one more thing. This Fortinet firewall is already configured. So let me do one thing. I have to stop this and wipe out. Wipe out.
if you are doing the wipeout for particular node, that means that device is existing configuration is removing, and again I have to start here. Okay, so now this is the fresh configuration. Let's see. अगर तो आप ये देख रहे हैं कि फुटनेट फायरवॉल है, अगेन दोबारा से स्टार्ट हुई है. Now we can see the default credential is admin and password is empty. And now we have to set new password again here. So password I am setting admin. Okay. So I can see firewall is get up now, and we can check some commands here. Like in Fortinet firewall, there are two types of commands. Okay. Two types of commands. Like one is get and other is show. Okay. In Cisco, there is only commands through which we can see entire configuration and pre-configured IPs or something details. But in Fortinet firewall, there are two terms like get and show. Through get, you can see the existing configurations like particular IPs. Suppose there is interface fast Ethernet 0/1. Okay. And if we want to check some particular configured only IP, in that case, we can use run like get system, this types of format there, get system interface. Okay, and you can check particular interface IP or something. Okay, whatever. Suppose on that interface you want to see something like existing configuration, that you can use like show commands. Okay. Okay, so that is the thing. So we are deleting, and we are going on that Fortinet firewall. So in that case, in that topology, we want to check like our pre-configured IPs, which IP is configured or not or something. So command is get, and then you have to type get system. Okay, and then interface, and you can see like port one or sorry, get system interface. So in that case, your visibility is very not perfect. Okay, so you can use get system interface, and you can type like question mark. If you will print like a question mark, then there is option like physical. Physical means physical interface, not logical. So you can see there, like there is port like port 1, port 2, port 3, port 4, and no IP is configured on that port number, port 2, port 3, port 4. But port 1, there is one particular IP is configured DHCP, and port 1 is basically is a management port. Okay. Now we have to configure like port 2, port 3, port 4. Port 4 we will use like a DHCP, and port 2 will take as a port 3. Okay. But thing is that there is two ways. There is two ways to configure particular IP in Fortinet firewall via GUI. GUI means graphical user interface, and CLI, command line interface. Okay, so there are two ways. Today in this session, we will discuss about only GUI. GUI, this is the basic thing. So each and every person's beginners can learn. So how can we configure that particular IP? So to configure that particular IP or something details in Fortinet firewall, so we want to access that particular firewall on that particular web browser on port number 88. Port number 80. So thing is that in Fortinet firewall, we can see that particular it's on that management port, the IP is configured, but we can't see particular like any specific configuration on that port. So I said to see the particular configuration, we have to run the command show system interface like port 1. Okay, so in port 1, you can see that VDOM is the root. I'll discuss in later session. So what is the VDOM? VDOM, there are multiple types like root or something, and particular interface mode. Like mode can be two types, DHCP or statics. And set allow access means that are the services, those are the enabled. Particular interface like physical. Okay, so thing is that, sorry. So particular on that interface, you can see there is not configured HTTP service. Okay. So if we will try to access that firewall on that particular IP, so first thing we have to like ping
on that device, so that IP is pingable or not. You can see IP is pingable. So I hope firewall is reachable as per process, because thing is that it's reachable. But I say firewall will not reachable. Thing is that HTTP port is not like configured here. Okay, so first thing we have to configure particular service. Okay, on that interface. So how can we configure particular service? So let's see. So first thing you have to like type config system interface, because thing is that now we are going to configure particular interface. Okay, then enter. And next process you have to type like edit. Edit means we are modifying the particular port, and then define port 1, port 2, port 3 something. So our port is like port 1. Okay, okay. And and thing is that whatever configuration, current configuration is present here, you can see like type command show. So show command that verificates the all types of visibility information on that port 1. So set allow access ping HTTPCA, okay, and SSH. Then you have to type here, and you can add one more service like HTTP. Okay, so HTTP service is enabled. Now you can like see, thing is that there is HTTP is involved, and you have to add the session. Okay, configuration is done. Now can we try? Okay, we can try. So firewall is coming online on that particular web browser. So thing is that we can access the firewall via GUI. That is our first task. And again I have to log in here. Admin. Then you have to log in here. Okay, such kinds of prompt will be there, and you can like you have to ignore, and like it's asking like something like dashboard setup or specify host name or something, we can configure later. So I type later here. And this is the particular some demo videos or something you can like see or something. But I don't does not want to see later later login. And this is the particular Fortinet firewall dashboard. So in that dashboard you can see, multiple like things here. Okay, which types of things here? Yeah, so here left side you can the left panel. In left panel you can see like dashboard, securities, network, user, devices, something 40 view sessions or something. That things will be taken care by on later videos. You can see like network session, policy object, security profiles. Okay, so those things are controlled by left panel. Okay, in like home page or like something in man dashboard, there are multiple like information like system information. That is the host name of that particular firewall serial number. You can see like in under system information, which is firmware is upgraded, or which is firmware is available. Netting type you can see here. They okay, system times you can see here, the uptimes you can see there in your like monitoring or in your network environment, how from but I mean from how many days, how many hours firewall is up or something. Okay, so those detail you can find out here under system information. There is one also column, or there is one also set like license. If firewall's license is up to date or not, because this is the like trial or something virtualization. So in that case license is not enabled there. But definitely you can see that if your license is like your appliance is licensed, in that case you will see like a green mark or something. Okay, or something IPS related, antivirus or web filtering related. So such kinds of thing allocated vCPU space memory also you can see here. This is the like particular like your dashboard. Okay, so anyway our task is to configure like interface configuration. So let's start. This is our basic labs. So here we will configure port 2 as a static IP, and we will define as a IP. Okay, I copy here. Then I have to go in dashboard under network and interface. Okay, interface port number 2. Port number 2 is our LAN interface. So once we define that particular role as a LAN, so that will be the part of like
our LAN network, and I define that particular IPs. So in that IPs you can define like /30, /32 or something. You can define like 2525.225.2252. Okay. So as per your convenience. Okay. I enable that service like ping service on that interface. Other services are not required. So I just enable the ping and I have to like there. Now I have to configure port 3. Port 3 is a different port which comes in like DMZ zone. Okay, DMZ zone, and I have to configure this IP here. But you can see conflict with port 2. He is saying that port 2 is already configured this IP. So it's like suggesting us to configure different IP. So I configure different IP 2.1. You can see here. So yeah, and I enabled ping also here, and I enable it. Okay, correct. Now port 2, port 4. Port 4 I have to define like port this is the like our WAN port, and we have to define like DHCP. No IP is required here, and ping is enabled, and I have to enable here. Okay, got it. So that is the thing. So can we in that GUI we can see that whatever the IP is enabled, whatever the services are enabled, physical interface. Can we see those information in our Fortinet firewall? Okay, let's see. So credentials admin. Okay. So how can we check? Get system interface, get system interface and physical. Okay, we can see here port 1 is that is the management IP, port 2 is the static IP, whatever we have configured before. Port 4 is the DHCP IP we have receiving. Okay, so nothing an issue. So first task is our is done. First task is our done. Fortinet firewall interface configuration is done. Okay. Now we have to configure statics routes configuration in Fortinet firewall. How can we achieve? So let's see. So in Fortinet firewall, we have to configure like 1.1 route towards this gateway. Okay. And 2.2 route toward this gateway. Okay. How can we configure? So let's see. In network we have to go in network, and then we have to go statics routes rule. We have to go on network, then statics routes, and I have to create new. Okay, whatever route, like first route is 1.1. Okay, and /32. Fine. And whatever my gateway will be there, like gateway will be there like 172.168 1.2 1.2, which is the router's R1's next router R1's IP address. So 172.168 1.2. Okay, that is fine. Okay, once I enter this IP, it and its next hop interface gate next IP is picked up automatically पोर्ट टू. ओके, आप ये देख रहे हो कि इसमें पोर्ट टू पे जो आईपी है, इसका जो पोर्ट टू है वो ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया. पोर्ट थ्री तो इसने सेलेक्ट नहीं किया. रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि हमने पोर्ट टू पे ऑलरेडी आईपी असाइन किया हुआ है. पोर्ट टू पे कौन सा आईपी असाइन किया हुआ है? 172.168.1.1. तो हमने जैसे ही 1.2 इसका गेटवे डिफाइन किया, उसने ऑटोमेटिकली पोर्ट टू ले लिया. जैसे ही हम पोर्ट नेक्स्ट होप आईपी 2.1 की सीरीज का इसमें असाइन करेंगे, देन इट विल टेक पोर्ट 3 एज ए गेटवे इंटरफेस. ओके, एग्जिट इंटरफेस. ओके, सी आई क्लिक ओके. नाउ आई हैव टू कॉन्फ़िगर लाइक 2.2 root also. So I can create manually or otherwise I can clone it. And further I have to type like 2.2. Fine. And I have to define like here 1.2 will not there, here 2.2. Okay, now it's saying port 2, and once I click anywhere, then it will take port 3. Okay, fine. Yeah, so that task will also achieve. Okay, statics routes also configured in Fortinet firewall. Now firewall policy configuration between lane. Okay, so that part will do later, but thing is that next we will configure R1 and R2 interface, loopback interface,
and default route, defaults routes on Cisco routers. So that part we will do. Sorry. Okay. So coming on Cisco routers. Okay. Cisco routers. R1. You can see this is the fresh router. Show IP interface brief. No IP is configured here. So let's start config T. First we'll start hostname R1 R2. Okay, R1, and then we will configure like which interface, fast Ethernet 0/0. IP I have to mention here 172.168.1.2, then 225.225.225 and 252, which is /32 subnet. Okay, no sir. Okay, again one loopback interface also, interface loopback 0, IP address 1.1.1.1 and then 25252525. This is the /32. Okay guys, loopback interface is also configured. Now I have to configure default route on Cisco routers towards firewall. करेक्ट, हमें क्या करना है, हमें एक डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करना है दोनों राउटर से फोर्टिनेट फायरवॉल की तरफ। तो वो डिफॉल्ट रूट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, आईपी रूट 0.0.0 0.0.0। ओके, इसका नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, इसका नेक्स्ट हॉप रहेगा सॉरी 172.168.1.1। ओके ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अगर सिस्को राउटर में जो लर्नर है, जो बिगनर है, उनको उनको देखना है कि क्या कमांड होता है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, आईपी रूट चेक करना है, शो आईपी रूट का टेबल चेक करना है। ये डिफॉल्ट रूट है, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। नाउ वी हैव टू कम ऑन राउटर R2। राउटर पे भी सेम थिंग है, हमें इसका नेक्स्ट होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम है पर्टिकुलर साइट का एक आइडेंटिफिकेशन है, लाइक R2 हमने कॉन्फ़िगर किया, फास्ट इथरनेट 0/0/2, फास्ट इथरनेट 0/0, and then I have to type define IP address here also 172.168.2.2 and IP 252. Okay, no set interface loopback 0, IP address loopback 0 पे मेरा क्या जाएगा 2.2 2525 25 और 25, ये मेरा /32 है। ओके, डिफॉल्ट रूट IP root 0.0.0, then and gateway default route is configured. Now we have to check IP address. So IP interface brief, IP is configured. Okay, and I have to check routing table also. So IP route. Okay, okay, yeah. So thing is that we have configured default routes, towards firewall. We have configured static routes towards both routers. So tell me, if I want to ping from router 1, IP is 2.2.2, so that IP will ping or not? Please tell me. Please comment here. Okay. So I am coming on router number R1. So that IP will ping out or not? Ping.2.2 and I am taking source 1.1.1. Please comment. Okay. IP is not pinging. Why? I am telling here. So you can see Fortinet firewall has 3 zones.
Fortinet firewalls here define 3 zones. So security device firewalls has the visibility, has the features like that. If any packets coming from one zone and he's trying to, that packet is trying to crossing a different zone, in that case by default Fortinet firewalls restrict or deny that packet to travel to different zones. Understand my point? फायरवॉल में एक सिक्योरिटी फीचर्स होता है, फायरवॉल राउटर में डिफरेंस यही है कि राउटर पे अगर किसी इंटरफेस पे अगर कोई पैकेट आता है, अगर और उसी राउटर के दूसरे इंटरफेस पे वो पैकेट जाता है तो राउटर उसको रेस्टिगेट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। बट फायरवॉल में दिक्कत ये है कि फायरवॉल में अगर एक पर्टिकुलर जोन से कोई इंटरफेस आता है, पैकेट रिसीव होता है और उस जोन के अलावा किसी दूसरे जोन में वो पैकेट जाता है, तो फायरवॉल क्या करता है, उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। क्योंकि उसके लिए फायरवॉल को हमें बताना पड़ता है एक पॉलिसी के थ्रू। इस पॉलिसी के थ्रू बताना पड़ता है हमें कि भाई कोई पैकेट है मेरे लेन जोन से, अगर कोई पैकेट आता है, लेन जोन से कोई पैकेट आता है और वो पर्टिकुलर किसी डीएमजेड जोन में अगर वो पैकेट जाता है तो उस पैकेट को आप अलाउ करो। अगर डीएमजेड से कोई पैकेट आता है और लेन जोन में वो जाता है तो उसको भी आप अलाउ करो, ये हमें फोर्सफुली बताना पड़ता है। ठीक है, ये किसका सिक्योरिटी फीचर्स है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें इसमें लेन जोन से और डीएमजेड जोन के बीच में हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। अब ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। ओके, so we have to configure firewall policy. Okay, तो अगर फायरवॉल पॉलिसी पे अगर हमें कोई फोर्टिनेट फायरवॉल पे कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है तो हमें पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा और क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। यहाँ पॉलिसी का नाम हम दे देते हैं लेन टू डीएमजेड। ओके, एंड वी डिफाइन लाइक पोर्ट टू, बिकॉज हमारा पैकेट कहाँ से आ रहा है, पोर्ट टू पे आ रहा है ना। पोर्ट टू डिफाइन कर दिया। आउटगोइंग इंटरफेस आपका पोर्ट 3 हो गया, ये पोर्ट 3 इंटरफेस हो गया। देन सोर्स, सोर्स आपका कोई भी हो सकता है, सोर्स आपका 1.1 भी हो सकता है, दूसरा सबनेट है वो भी हो सकता है, तो हम इसको ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं। डेस्टिनेशन में भी हमारा ऑल हो सकता है कि मेरा पैकेट 1.1 से आ रहा है, वो भले 2.2 को पिंग करे, भले 10.2 को 10.0.2 को पिंग करे। हालांकि हमने 10.0.2.1 है वो अदर लूप बैक इंटरफेस दोनों साइड पे हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, फिर भी हम इसको ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल ऑल और सर्विस मेरी ऑल हो। ठीक है, भले ही वो भले ही राउटर R1 को वो पिंग करे, एचटीटीपी करे, किसी भी पोर्ट पे लेके जाए, हमने सर्विसेज ऑल कर रखी है। ठीक है। नाउ इंस्पेक्शन मोड। इंस्पेक्शन मोड ये क्या है, ये एक सिक्योर ये एक अलग फीचर्स है जिसको हम डिस्कशन करेंगे ऑन लेटर सेशंस। ओके, इसके दो इंस्पेक्शन मोड के दो मोड होते हैं, फ्लो मोड, प्रॉक्सी मोड। ठीक है। नेटिंग टाइप, नेटिंग टाइप हमें क्या है, लेन से अगर ट्रैफिक आ रहा है, डीएमजेड में जा रहा है, इंटरनेट पे जा नहीं रहा है, तो हमें ये डिसेबल करनी पड़ेगी। ठीक है। देन ये सिक्योरिटी प्रोफाइल है जो यूटीएम का फीचर्स है, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेटिंग हमने डिसेबल किया है, हमें इस फीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। ऑल सेशन हम ट्रैफिक के लॉग्स हैं वो हमें चाहिए, हम इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है। Now, can you tell me now it will ping or not? Okay, let's see. You see the magic of security. पहले ये पिंग नहीं हो रहा था, जब मैं 2.2 को पिंग कर रहा था राउटर 1 से इसको पिंग कर रहा था, क्योंकि वो फायरवॉल की जो पॉलिसीज है वो इसको डिनाई कर रही थी। जैसे ही मैंने पॉलिसी को कॉन्फ़िगर किया उसके बाद में इसका इमीडिएटली इसका पिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, यू कैन सी हियर रिपीट लाइक 100, मैं कितने भी इस पे पैकेट भेजूं ये इसको पिंग करता रहेगा। ठीक है। तो जब तक आप फायरवॉल में पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और ये देखो आप इसको है ना, यहाँ बाइट्स भी दिख रहा है। ठीक है, ये इसका जो ट्रैफिक है, कितने बाइट्स में ये ट्रैफिक आया है वो दिख रहा है। आप नेटवर्क में जाओगे, डैशबोर्ड में जाओगे, आपको यहाँ सेशंस भी दिखेगा। अगर आपको सेशंस देखने हैं तो आपको सेशन देखेगा। सेशन क्या दिखेगा, आपका सोर्स, जो ट्रैफिक आपका जा रहा है
जो यहाँ से आपका ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है वो किस आईपी को लेके क्रिएट हुआ है, 1.1। डेस्टिनेशन में क्या है, 2.2। ये आप सेशंस में देख सकते हो। ठीक है, किस टाइप का ट्रैफिक है, आईसीएमपी टाइप का ट्रैफिक है। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। तो हमारा ये टास्क हो गया, लेन टू डीएमजेड जोन के लिए हो गया। बट अगर मैं इंटरनेट को पिंग करता हूँ 1.1 से, ठीक है, अगर मैं इंटरनेट को पिंग करता हूँ लाइक पिंग एट, ओके, सोर्स 1.1.1, तो ये पिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये पिंग होगा कि नहीं होगा? पिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फायरवॉल पॉलिसी पे आप देख रहे हो इस साइड में, उस डीएमजेड जोन में हमने कोई रूट नहीं डिफाइन कर रखा है, जो हमने पॉलिसी बना रखी है। अगर इधर रूट नहीं डिफाइन कर रखा तो फायरवॉल क्या चेक करेगा, आपका पोर्ट 2 पे देखेगा कि पोर्ट 2 पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है ना? तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए फिर अलग से पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी कि मेरा लेन का ट्रैफिक है, इंटरनेट जोन में जाएगा तो पॉलिसी चाहिए उसको। तो उसके लिए हमें फिर क्या, दोबारा पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, फायरवॉल पॉलिसी में जाना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू क्रिएट वन पॉलिसी ऑल्सो, पॉलिसी नेम लेन टू इंटरनेट। ओके, you have to configure port 2, then port 4, पोर्ट 2 से आया पोर्ट 2 4 पे जाएगा, मीन्स पोर्ट 2 के इस इंटरफेस पे कोई पैकेट आएगा और पोर्ट 4 पे भेजना है। सोर्स मेरा कोई भी हो, डेस्टिनेशन मेरा कोई भी हो, सर्विस मेरी ऑल हो। ठीक है, और इस पे मुझे क्या करना है, इस पे मुझे बताओ, नेट इनेबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नेट क्या है, बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और ये होता क्या है, इसकी अलग अलग नेटिंग के कुछ टाइप्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये किस केस में करते हैं कि लाइक जब आपका प्राइवेट सब कुछ सबनेट्स हैं, प्राइवेट आईपीज हैं, इनका एक पर्टिकुलर गेटवे है, और उस गेटवे से अदर साइड पे, वेन साइड पे आपके पब्लिक आईपीज हैं, इंटरनेट आईपीज हैं, जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। आपकी लेन साइड में लेन इंटरफेस है, मल्टीपल कुछ हुआ है। ठीक है, कौन सबनेट को आपका उस ट्रैफिक है आपको भेजना है इंटरनेट पे, मतलब मीन्स आपको उनको इंटरनेट चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है नेटिंग का, बेसिकली ये लेन साइड के जो भी पब्लिक प्राइवेट आईपीज हैं उनको कन्वर्ट करता है पब्लिक आईपी में, फिर इंटरनेट पे लेके जाता है। ठीक है, बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। टेक्निकली अगर डिस्कशन करेंगे तो उसमें बहुत कुछ है। ठीक है ना? तो हमें ये नेट इनेबल करना है, क्योंकि लेन साइड का जो भी मेरे आईपीज हैं उनको इंटरनेट चाहिए। तो मुझे क्या करना है, नेट इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, नेट इनेबल किया, सिक्योरिटी ऑल सेशन किया, ओके किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेन साइड से ट्रैफिक रेज करना है। यहाँ से ट्रैफिक मेरा रेज होगा, इंटरनेट पे जाएगा, वो पॉलिसी बन गई है। लेन टू इंटरनेट के लिए भी पॉलिसी बन गई है। अब अब मुझे R2 से ट्रैफिक रेज करना है इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट का आईपी हो गया मेरा .8 और सोर्स हो गया 1.1। देखते हैं पिंग होता है कि नहीं होता है। ओके, पिंग इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। इसका पिंग नहीं हो रहा, 1 मिनट। कौन से पिंग कर रहा हूँ, सोर्स 1.1 को भेज रहा हूँ, सोर्स एक बार मैं रिमूव करता हूँ। ओके, ओके। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने जब सोर्स इसका लगाया 1.1 लगाया, 1.1 लगाया, तो इसमें क्या है, पैकेट है 1.1 को लेके जा रहा है। बट हमने क्या किया है नेट में, हमने ये बोला है कि जो इसका खुद का जो इसका लेयर इंटरफेस है उसको ही वो नेट करके उसको आगे सेंड करे। हमने जो इसके बिहाइंड में जो लूप बैक इंटरफेस है उनको नेटिंग करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। So thing is that now internet is can now able to reach, okay, from router 1। okay, so अगर राउटर 1 से मेरा इंटरनेट रीचेबल है तो R2 से भी रीचेबल होना चाहिए ना। दिखाता हूँ, बट आप देखोगे ना तो R2 से आपको इसको इंटरनेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वो मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो, क्योंकि हमने पोर्ट 3 से पोर्ट 4 के बीच में हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। समझ रहे हैं, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 के बीच में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, इसकी वजह से। तो पोर्ट 3 से पोर्ट 4 के बीच में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आई हैव टू क्रिएट वन पॉलिसी ऑल्सो,
तो हमने ये पोर्ट 4 और पोर्ट 4 के बीच में बना रखी है। एक जो दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं, ये आपकी DMZ से, ठीक है, DMZ टू इंटरनेट, ये पॉलिसी बनाया। पोर्ट हमारा 3 आएगा, नेक्स्ट पोर्ट आएगा आपका पोर्ट 4। सोर्स मेरा ऑल रहेगा, डेस्टिनेशन मेरा ऑल रहेगा, सर्विस मेरी ऑल रहेंगी, नेट मेरा इनेबल रहेगा ऑल। देखते हैं अभी R2 से बताओ पिंग होगा कि नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या सीन है, हमारा जो अपना जो टास्क था, Fortinet फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन लेन जोन टू DMZ जोन, ये कंप्लीट हो गया है। लेन जोन टू इंटरनेट जोन है, ये कंप्लीट हो गया। उसके अलावा हमने DMZ जोन से इंटरनेट जोन के लिए भी कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है ना। तो ये आज का एक शॉर्ट सेशन था उन पे Fortinet फायरवॉल पे। आपको वीडियोज कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन मेरा रहेगा, इसमें आप ये देख रहे हो इंटरफेस के कुछ मल्टीपल टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है ना। जो अभी आप देख रहे हो ये फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ क्रिएट करने हो लाइक इंटरफेस वर्चुअल वायर्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्फ़िगर करना है, लाइक इसकी कुछ एसडीएन का एक अलग डिफरेंट सेशन रहेगा, लास्ट में मैं इसको कवर करूंगा। पॉलिसीज के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इसके लॉग्स, हाउ कैन वी श्योर लॉग्स और ऑल्सो। सो वो हम जैसे जैसे टाइम इसमें ये टाइम मिलेगा मुझे, मैं शॉर्ट सेशन उस पर लेता रहूंगा। बाकी ये वीडियोस कैसा लगा, आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।